हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शुद्ध भगत चरण रेणु भजनयन शुद्ध भगत चरण रेणु भजनयन शुद्ध भगत चरण रेणु भजनानुकूल भगत शिवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार शुद्ध भगत चरण रेणु भजनयन शुद्ध भगत चरण तिथि भक्ति जननी যতনে পালন করি মাধব তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি মাধব বলি পরম আদরে গরি কৃষ্ণ বসন রাঙ্গে আমি প্রণয় ভগত সঙ্গে শুদ্ধ ভগত চরণ রেণু ভজনয়ন শুদ্ধ ভগত চরণ রেণু ভজনা আছে পরম আনন্দ হয় যুগল মূর্তি দেখিয়া মোর পরম আনন্দে হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ যায় 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 যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায় চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ
सुख न सीमा पाए। चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। गौर प्रिय साथ सेवनी जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय साथ सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय साथ सेवनी जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा। प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करे 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 शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनु। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनु। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनु। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। निकलो।
কি জানি কি বলে তোমার ধামিতে হইনু শরণাগত। কি জানে কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত। কি জানি কি বলে তোমার ধামিতে হইনু শরণাগত। কি জানে কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত। তুমি দয়াময় পতিত পাবনা পতিত তারণীরত। 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 ভরসায় আমার এই মাত্র না, তুমি তো করুণাময়। ভরসা এই মাত্র না, তুমি তো করুণাময়। তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম, অবশ্য চাবি ভয়। তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম, অবশ্য বুঝাবি ভয়। তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম, অবশ্য চাবি ভয়। তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম, অবশ্য বুঝাবি ভয়। আমারে অবনি ভিতরি নাহি, আমার তারিতে কাহারো শক্তি, অবনি ভিতরে না। দয়ালু ঠাকুর ঘোষণা তোমার, অধম পামরি কাহি। দয়াল ঠাকুর ঘোষণা তোমার, অধম পামর ত্রাহি।
দয়াল ঠাকুর ঘোষণা তোমার চরণে না আমি নিত্যদাস তুমি পালয়িতা আমি নিত্যদাস তুমি গোপ্তা জগন্নাথ নিত্যদাস তুমি গোপ্তা রে তারিবি তুমি আমি মাত্র দাস আমার করি নিবারণা আমার নাহি তো আমি তোমার চরণ করিনু বরণ তোমার দিবিন লয়েছে তো নামে নামে রুচি কি জানি বলে ওই পাতি পতি বলে তোমার ধামেতে গোরা গুনা গাও শুনি গৌরা গুনা গাও শুনি গোরা গুনা গাও শুনি গৌরা গুনা গাও প্রভু মিলন প্রেম পরশ মুনি বাহু পুণ্য ফলে সোপাহু মিলানা প্রেম পারস মনি বহু পুণ্য ফলে সপ্রভু মিলন প্রেম পরশ মুনি বাহু পুণ্য ফলে সোপাহু মিলানা প্রেম পারস মনি গোরা গুণ গাও শুনি গৌরা গুনা গাও শুনি অখিল জীবের এসক শিবে অবিশেষ সে নয়ন পরালয় করুণায় নিরীক্ষণে অরুণা নয়নে দেব সতন বাসুদেব কহে শতধারা বহি সুদাও হরে কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्णा। तो और 77th व्यास पूजा ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। तो आज के सत्र में हम श्रीला गुरु महाराज जी का महिमा वर्णन सुन रहे हैं अलग अलग भक्तों के द्वारा। तो जो भक्त भी इसमें भाग लेना चाहता है, जो भी गुरु महाराज के बारे में शेयर करना चाहता है, अगर आपके पास लिखी हुई ऑफरिंग है तो आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अपने नाम यहाँ पे हार्दिक प्रभु हैं उनको दे सकते हैं। तो
अभी हम अलग अलग भक्तों से रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु को, वो अपनी ऑफरिंग आके पढ़ें शिला गुरु महाराज के लिए। उसके पश्चात जो भक्त पढ़ना चाहते हैं अपना नाम दे सकते हैं। और 7 o'clock 7 बजे एक वीडियो ऑफरिंग है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नीति नामिने स्निग्धो चेता सुप्रणेता वाग्मीनां च रसप्लुतम् प्रभुपाद गत प्राणा नौमि भक्ति चारु पदम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की, परमाराध्य गुरु महाराज की। डियरेस्ट His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at the dust of your lotus feet. All glories to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. All glories to Your Holiness. Guru Maharaj, you are the perfect example of Nishkinchan Vaishnava, because although you are a powerful Acharya in the disciplic succession of Brahma Madhya Gauriya Sampradaya, it is your right to have offerings, honors, and worships from the disciples and well-wishers on the occasion of your Vyasa Puja day. But for hiding your personal position, name, fame, and adoration, you wrap up the day of your auspicious appearance, 17th September, with the entitled Srila Prabhupada Memorial Festival. Guru Maharaj, you are a luminary in the world of Gaudiya Vaishnavism in your own right. But simultaneously, you promoted Srila Prabhupada and put him in the center of all your activities and thoughts. Your teachings, your guruship, your leadership, your relationship with your god brothers, all were based on the allegiance to Srila Prabhupada and not on your independence. In this way, you set up a perfect example of unity in diversity in your life. Once, Srila Prabhupada wrote a letter to Aarti Rishi Prabhu that every individual soul has some sense of independence. Therefore, coupling together such individual autonomous living entities and having them go in the same direction is always a challenge. Guru Maharaj, you had so much insights into this matter like Srila Prabhupada, and that's why most probably Srila Prabhupada brought you into this movement right before he was about to leave and made you compatible by teaching you everything, giving you Harinam, Brahman, and Sannyas initiation within 6 or 7 months, and handed over the responsibility of carrying such an important role to keep this movement together and push forward.
facing all the challenges. So there is no doubt that you are a perfect leader. Guru Maharaj, you appointed me as one of the temple co-president to run the temple affairs smoothly. By your blessings, I am continuing it. But I can understand how it is challenging to please everyone and lead them in the same directions as you wanted. Sometimes I get so much disturbed, but after a while, by your mercy, I can feel it's my service. To fulfill your desire, I am ready to do everything. Please, Guru Maharaj, empower me so that I can tolerate and adjust all the situations for your satisfaction. Guru Maharaj, this year, after completing Bhakti Vaibhav course, I have started Bhaktivedanta course under Mayapur Institute of Higher Education and Journal Supervisor course under GVC College. Please bless me, Guru Maharaj, so that I can utilize all the knowledges, experiences, and realizations in the service of Srila Prabhupada's Iskcon without having any ulterior motive. I am very much grateful to you, Guru Maharaj, because mercifully you gave me shelter at your lotus feet. Evaluate your love and affection. When we accept something from the spiritual master, we become indebted. We need to be obliged to reciprocate. You gave me many things, but I could not reciprocate anything good with you. Rather, I have inflicted only pain on you. Please forgive me, Guru Maharaj, and bless me so that I can love and serve the devotees and spread the teachings of Srila Prabhupada all over the world for your pleasure. Your insignificant servant, Prema Bhakti Das. Hare Krishna. Srila Guru Maharaj ki, Prabhupada ki go. Hare Krishna. Thank you very much, Prem Bhakti Prabhu, for reading your offering to Srila Guru Maharaj. You mentioned, आप बता रहे थे कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करना बहुत टफ है, परंतु जब हम श्री गुरु महाराज का स्मरण करते हैं तो जो कठिन से कठिन भी कार्य है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमें मेमोरियल फेस्टिवल में श्रीला प्रभुपाद के शिष्य लोग बता रहे थे कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद हमेशा उनको मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हैं, लेकिन हम मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार होने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग द सेम पॉइंट। तो अभी मैं अगली बार बुलाना चाहूँगा नटवर कृष्ण प्रभु, वो अपनी ऑफरिंग श्रीला गुरु महाराज के लिए पढ़े। उसके बाद श्याम गोविंद प्रभु पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी निति नामिने स्निग्धचेत सुपणित वांग्मिनं सरसाप्लुप्तम प्रभुपादगत पाण नमामि भक्ति चारु प्रभु। परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज की चरणों में नमन करके मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। इस बार गुरु महाराज की जब ऑफरिंग लिखने के लिए मैं बैठा तो मेरे मन में दो पंक्तियां आई कि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है गुरु महाराज ने पूरा गढ़ा है, और अभी तक हम जितने भी यहाँ आने के पहले हमारे ऊपर केवल माया का पाश ही चढ़ा था। तो ये दो पंक्तियां मेरे पास आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बार गद्य के बदले में कुछ पद्य में लिखना चाहिए। तो मैं चित्तहरि प्रभु जी को पास गया, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं,
तो मैंने चित्तहरि प्रभु को बोला कि प्रभु जी मुझे 2 लाइन मेरे मन में आई है, इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ मैं, तो मैं मनी मन आपको गुरु मान के इसके आगे कुछ प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आप प्रयास कीजिए। तो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदा ही देवताओं को कामना हेतु स्मरा है, भौतिक संपदा प्राप्ति ही एकमेव लक्ष्य धरा है। मैं और मेरा करते हुए अब तक जीवन टरा है, परम जानने का प्रयत्न हमने कभी न करा है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। पूर्व जन्म सुकृति के कारण दर्शन आपका मिला है, स्नेह सिक्त भंगिमा से मरुचित्त समग्र गिला है। आपकी वाणी वज्र से अचल भ्रमासुर भी हिला है, भंगुर इंद्रिय तृप्ति महर माटी में जा मिला है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। अल्पायु में मातृ स्नेह आपका काल ने लिया है, उसी खोई ममता को आपने भक्तों को दिया है। युवावस्था में मोह त्याग आध्यात्म चयन किया है, विदेश भ्रमण में खोया कोहिनूर पुनः पा लिया है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। विभिन्न मार्गों में भी आपका मन नहीं डिगा है, परिचय से इस्कॉन ही आपको गंतव्य लगा है। भक्ति रसामृत पाते ही अहोरात्र आपने पगा है, प्रभुपाद ही मेरे गुरु होंगे, मन में यह संकल्प जगा है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। चैतन्य जन्मभूमि जाकर पश्चिम वेश त्यजा है, अवलंब मुंडन कर वैष्णव वस्त्रों से तन सजा है। वरिष्ठ वैष्णव की चरण सेवा ही में तो अब मजा है, गुरु साधु शास्त्र से ही भगवत धर्माश्रय भजा है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। चलती ट्रेन में प्रथम गुरु सानिध्य आपने जाना है, चलती ट्रेन में प्रथम गुरु सानिध्य आपने जाना है। आप ही खोए चैतन्य पार्षद प्रभुपाद ने माना है। युवावस्था में ही आपको संन्यास दीक्षा, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया का पाश ही चढ़ा है। आपने जन्मों के बाद यह जीवन गुरु सेवा को दिया है और गुरु आदेश पालन अंतिम श्वास तक किया है। स्नेहिल पितृवात्सल्य हमने आपसे ही तो लिया है, वसुधैव कुटुंबकम को आपने ही चरितार्थ किया है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। प्रथम श्रवण मात्र से ही सबका मन मोह लिया है, वेद ऋचाओं का सरल भाष्य आपने ही तो हमें दिया है। गूढ़ ज्ञान को सुगम रसपूर्ण आपसे ही तो पिया है, हमारे बंजन मन को वसंत सा पल्लवित किया है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। और शाश्वत मरीचिका को आध्यात्मिक बनाना है, मिथ्याध्यात्मक धारणा को पूर्णतः झुटलाना है। आपके करुणा सागर की मात्र एक बूंद को पाना है, आपकी शिक्षाओं को हमें आजीवन अपनाना है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारे वपु सेवा का सौभाग्य सबके हिस्से कहाँ आना है, वपु सेवा का सौभाग्य सबके आना है। गोपी गीत के तात्पर्य से वाणी सेवा श्रेष्ठ, यह रहस्य अब गले से लगाना है। हे गुरु महाराज, आपने ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पाश ही चढ़ा है। आपकी दीक्षा अनुग्रह से विग्रह सेवा को जाना है, वैष्णव सदाचार अनुपालन को शुद्ध ज्ञान माना है। पावन व्यास पूजा पर मन में यही संकल्प ठाना है, गुरु सेवा में ही श्वास छूटे, यही नेटवर्क ही पाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद नटवर कृष्ण प्रभु। इतने अच्छी पोयम लिखी उन्होंने श्रीला गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन के लिए। और लास्ट वाली लाइन बहुत अच्छी कि किस प्रकार से हमारा जीवन किस तरह से माया में पड़ा था और आपने ही वास्तविकता में हमारा जीवन बनाया है। और लास्ट में, हे गुरु महाराज, आप ही हमारा जीवन गढ़ा है, आपके पूर्व हम पे तो मात्र माया पास ही चले। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
थैंक यू। सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा श्याम गोविंद प्रभु। वो अपनी ऑफरिंग श्रीला गुरु महाराज के लिए पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात रंगिनी राधिका माता। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नीति नामिने स्निग्ध चेता सुपनेता वाग्मी नाम चार सापित प्रभुपाद गता प्राण भक्ति चरु पदम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात निषिद्ध। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, मेरा नम्र प्रणाम था, जिसमें हर कार्य इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से पूर्ण था। यह कभी विचार नहीं आता था कि हम मनुष्य जीवन क्यों मिला है। बस भौतिक जीवन में जिस तरह प्रतिस्पर्धा होती है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और सुखी रहा जाए, केवल इसमें ही पूरा समय जाता था। लेकिन कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से आपकी कृपा से जुड़ने के पश्चात मैं जान पाया कि हमें मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिलता है और हम पैसा कमाने की दौड़ और इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वह केवल एक मृग तृष्णा के समान है। हम इस भौतिक जगत में जो दुख भोग रहे हैं, इसका कारण हम भगवान से अपने संबंध को भूल चुके हैं। ये सारी शिक्षाएं हमें आपके द्वारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में आने के बाद प्राप्त हुई। गुरु महाराज जी, आप हर आध्यात्मिक विषय को इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि वह किसी छोटे बच्चे को भी आसानी से समझ आ जाए। गुरु महाराज जी, आपकी वाणी के श्रवण से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। आपकी कृपा से इस महान आंदोलन में हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उज्जैन में रहते हुए इस्कॉन मंदिर में वृंदावन का वातावरण मिला, जैसे सुबह मंगल आरती करना, जप करना, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना, वैष्णव का संग प्राप्त करना एवं अर्च विग्रह की सेवा करना आदि लाभ प्राप्त हुए। गुरु महाराज जी, हमें कई शिक्षा आपके प्रवचन द्वारा मिलती थी और कई आपके आचरण द्वारा हम आपको देखकर सीखते थे किस तरह एक वैष्णव को आचरण करना चाहिए। आप इसके मूर्तिमान रूप हैं। गुरु महाराज जाने के लिए आपने अभय चरण सीरियल का निर्माण किया और प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार आपने उनकी पुस्तकों का अंग्रेजी से बंगाली में अनुवाद किया और कृष्ण भावनामत आंदोलन को कई देशों में फैलाया। गुरु महाराज जी, आपकी मृदु वाणी और दिव्य मुस्कान के कारण जो भी आपसे मिलता आपका बनकर रह जाता था। आपके दिव्य गुणों के कारण ही इस्कॉन उज्जैन मात्र 9 महीने की अवधि में बनकर तैयार हुआ। गुरु महाराज जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकूं और जीवन के आखिरी क्षण तक सतत निरंतर आपकी सेवा में रह सकूं। आपका दास श्याम गोविंद दास। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम गोविंद प्रभु अपने रीड ऑफरिंग को रीड करने के लिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा रंगनी राधिका माता जी को, और उसके बाद श्यामली राधिका माता जी और साधना राधिका माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूजनीय श्रील गुरु महाराज, आपके पतित पावन चरण कमलों में मेरा प्रणाम। श्रील गुरु महाराज, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज आपका आविर्भाव दिवस है, जिसे हम आज व्यास पूजा के रूप में मना रहे हैं। आप श्रील व्यास देव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। शिष्य को हमेशा अपने गुरुदेव का गुण कीर्तन करना चाहिए और हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान अपनी पूजा से भी ज़्यादा उनके भक्तों की पूजा से प्रसन्न होते हैं। श्रील गुरु महाराज, मैं आपके चरण कमलों में बहुत कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। आपकी कृपा पर मेरा आध्यात्मिक जीवन टिका है। आप गुरुदेव के रूप में मेरे आध्यात्मिक पिता हैं। मैं उस क्षण को बार बार याद करती हूँ जिस दिन आपने मेरे प्रभु जी और मुझे थोड़ा सा डांटते हुए और गंभीर शब्दों में हमें अहमदाबाद से उज्जैन में शिफ्ट होने के लिए कहे थे। फिर हम लोग तुरंत 1 महीने में ही उज्जैन शिफ्ट हो गए थे। आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। उज्जैन में रहना मतलब अपने पिता के घर में रहना। श्रील गुरु महाराज, आपके अप्रकट होने के पिछले 2 वर्षों में मुझे जीवन में बहुत एकलापन लगता है। आपकी कमी हर जगह लगती है। आंखें आपका दर्शन करने के लिए तरस रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह बीते 2 वर्ष एक सपना है जो टूट जाएगा, और वे जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिए हैं, शरीर और आत्मा के बारे में समझाए हैं, उस पर चिंतन करती हूँ। आप कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का वपु सेवा से ज़्यादा वाणी सेवा महत्वपूर्ण है। आपकी वाणी बार बार मेरे कानों में गूंजती है। श्रील गुरु महाराज, आपके उपदेशों का पालन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अपनी अज्ञानता और अनर्थ के कारण मैं उसे ठीक से पालन नहीं कर पा रही हूँ। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार। हमेशा मंदिर आते रहना, मंदिर के अथॉरिटी को फॉलो करना, जीबीसी ही अल्टीमेट मुख्य है। मिलजुल कर रहना, अच्छे भक्त बनना, हमेशा कृष्ण का आश्रय लेकर रहना, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को रोज पढ़ना, श्रील प्रभुपाद कर सकूं एवं करें। आपके चरण कमलों की सेविका रंगीनी राधा दासी। श्रील गुरु महाराज की आपकी ऑफरिंग पढ़ने के लिए श्यामली राधिका माता जी कैन कम। श्यामली राधिका माता जी। उसके बाद साधना राधिका माता जी। हरे कृष्णा। आदरणीय गुरु महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो ओम विष्णु स्निग्ध चेत नौमी भक्ति चारु पदम। गुरु महाराज को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गुरु महाराज, मैं तो आपके शब्दों के में मेरे परिवार जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, झुंझलाहट, लोगों की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर तूल देना, सारा ध्यान इसी में लगा रहता था कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। अब उसने मुझे गलत बोला है तो उसको अपनी इस गलती की सजा अवश्य। अहंकारी हो जाती थी, भगवान की कोई सेवा नहीं करूं, कैसे मैं अपना पूरा जीवन में शायद मैंने इसका बुरा किया होगा। तो कुल मिलाकर भौतिक बातों से ध्यान हटाकर आध्यात्मिक बातों में ध्यान लगाना केवल आपके कारण ही जाना। तब थोड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि मेरे फादर इनला भी महाकाल मंदिर में पुजारी थे और मैं हमेशा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करती। केवल नाम जप के कारण ही संभव हो सका है। गुरु महाराज जी, अभी भी मुझ में बहुत गलतियां हैं और मैं सब कुछ त्याग कर पूरी तरह भगवान की सेवा में
पूरी तरह शरणागत होना चाहती हूँ और मुझे इस कार्य में आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। आपकी कृपा की प्रार्थनी, आपकी दासी श्यामली राधिका देवी दासी। बहुत साधना राधिका माता जी अपनी ऑफरिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद असीम कृपा प्रभु यहाँ पे हैं, असीम कृपा प्रभु पढ़ सकते हैं। उसके बाद किशोरी माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्निग्धचेतः सुप्रणेत वाग्मिनं दारुपदम्। मेरे क्योंकि आप बद्ध जीवों की दुखी देखकर करके सब पर कृपालु हो जाते। आप हमें दीक्षा पर अत्यंत अत्यंत ऋणी हैं। गुरु महाराज किया इतना सुंदर अर्चा विग्रह, इतने सुंदर भगवानों का संग प्रदान करके और इतने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हमको प्रदान किए। सारे भक्ति के विधि विधानों को जीवन में लागू करने के लिए सारी सुविधाएं आप महाराज। आप श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्य है और पुत्र भी है। आप पूर्ण जीवन गुरु की प्रति समर्पण के बाद आज भी आपके व्याख्यानों, क्लासेसों माध्यम से अपने सुमधुर कीर्तनों और भजनों के द्वारा आप बद्ध जीवों का आज तक उद्धार कर रहे हो। गुरु महाराज कृपा करो कि आपके बताए मार्ग पर हम अनवरत चलते रहे। आपके गुरु भाई कहते हैं कि आप वैष्णव सदाचार के मंत्री हैं, क्योंकि आपने अपने आचरणों से सदा यह करके दिखाया है। आप सभी से बहुत बहुत प्यार से और मिलजुल कर रहते थे। गुरु महाराज आपने हमें भी यह सिखाया है कि ये शिक्षा हम सब मिलकर पालन कर पाए और इस्कान रूपी आप कर सके। पुनः आपके चरणों में पूर्ण रूप से पालन कर पाऊं। आपका कृपा पूर्ण आशीर्वाद सदैव बना रहे। हम बहुत नादान अबोध है कि हम आपके बताए मार्ग का पूर्ण श्रद्धा से तन मन और धन से पालन कर पाए और आपके चरणों की सेवा में ये पूर्ण जीवन समर्पण। कृष्ण पढ़ने के लिए राधिका माता जी। उसके बाद मुकुंद मुरारी प्रभु अपनी। हरे कृष्णा। भक्ति चारु स्वामिनी नामिने स्निग्ध चेत सुप्रणीत भगमीनाम चरसाप्लुतम प्रभुपाद गत प्राण नमी भक्ति चारु पदम वंशा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु बेवच। कोई ऑफरिंग लिखने का टाइम भी नहीं मिला है, तो फिर भी हम दो चार बात करेंगे। तो गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र है उसमें जो अर्थ आता है, जो प्रभुपाद का एक बहुत शिक्षा है। को प्यार करते हो तो प्रभुपाद को प्यार करिए, प्रभुपाद का बात पर चलिए, प्रभुपाद का मिशन पर चलिए, प्रभुपाद का हर शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। मेरे को बहुत सुयोग मिला है। हम बहुत डर में रहते थे। लास्ट में बिलिंग का टाइम हो, बाहर में हो, तो गुरु महाराज से मेरा का एक शिक्षा मिला है। वो शिक्षा है किस तरह से भक्त का साथ प्रेम करना, स्वार्थपूर्ण आदर करना, और किसी का तरफ किसी को खिलाना। ये गुरु महाराज से मेरा 3-4 चीज बहुत अच्छी तरफ से मिला है। फिर बोला है जो 14 साल मेरे को सुयोग मिला है कुकिंग करने का, वैष्णव लोग का कृपा से। तो इसी का हिसाब से मेरे को यही मिला है जो सब हर आदमी, हर डिवोटी लोग का साथ अच्छी तरफ से प्यार करो। मैंने गुरु महाराज का यूएस में था, ऑस्ट्रेलिया में, और हर जगह में देखा गुरु महाराज जहाँ पे जाते थे, सीनियर जो गॉड बिरादर है, गुरु महाराज का कोई सन्यासी, सबको बुलाते थे, प्यार से बात करते थे, खिलाते थे,
हाथ का हर चीज एक फर्स्ट क्लास एक है। तो यही मेरा शिक्षा मिला है जो खिलाने का यही आदर है। क्या शिप का पिक्चर है। तो गुरु महाराज का कभी कभी बोलते थे जो ये इस्कॉन एक शिप है जहाज। श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद असीम कृपा प्रभु अपनी ऑफरिंग पढ़ने के लिए। उसके बाद किशोरी माता जी अपनी ऑफरिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद मोहिनी राधिका माता जी। में हमारे ओर से गुरु महाराज जी, आप सभी के बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो पर वाणी के रूप में अभी भी हमारे बीच हो। गुरु महाराज जी, आपके गुणगान करने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है पर मैं करने के लिए उत्सुक हूँ। आपका गुणगान करे उतना काम है जितना कि कोई मीठी चीज आपके हो। हमेशा हंसमुख रहते हो। आपके चेहरे पर कभी भी कोई शिकवा परेशानी नजर नहीं आती है। आपके अंदर कभी कोई भी डुप्लीसिटी नजर नहीं आती है। शिष्य चाहे कोई भी हो, आप सोए को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी तरह हर कोई बच्चे से लेकर हर कोई बड़ा व्यक्ति आपके आचरण, व्यवहार, प्रेम, कीर्तन से हर कोई आकर्षित होता है। आपकी सरलता बहुत ही सराहनीय है। गुरु महाराज जी, आपके रूम में जो आपकी तस्वीर लगी हुई है वो इतनी आकर्षित है कि बस अभी आप कुछ बोलने वाले हो ऐसा लगता है। आपने आपके आचरण, व्यवहार, सेवा से श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर रहे हो। गुरु महाराज जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके और शिष्यों की तरह श्रील प्रभुपाद जी की मिशन सेवा में शामिल मदद कर पाऊँ, मेरे आचरण व्यवहार में सुधार ला पाऊँ, आपने जो मुझे आदेश दिए उसका पालन कर पाऊँ। गुरु महाराज जी, जब आप हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद थे के रूप में कितना कुछ दिया। हाँ, बच्चा कैसा भी हो, ना समझ, नालायक, मतलबी, कृपा में कोई भी कमतरता नहीं है। कमतरता मेरे अंदर है, जो कि आपने दिया है उसे मैं ठीक तरह से नहीं ले पाई। गुरु महाराज जी, आपने एक बार सपने में आकर कहा कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। एक प्रकार से उज्जैन मेरा मायका है। बेटी भली ही कितना ही दूर चली जाए, उसकी यादें हमेशा मायके में और वहाँ माता पिता के दिल में बसी हुई है और वह हर बात बिना बताए बच्ची की मन की बात जान लेते हैं। उसी प्रकार हम भी आपके दिल में बसे हुए हैं और आप उसी तरह हमारी मन की बात को जानकर हमें हमारी सुविधाएं प्रदान करते हो। गुरु महाराज जी, आपने हमें बहुत कुछ दिया। मैं अभी कुछ दिन पहले आपका दिया हुआ प्रवचन कृष्ण कथा सुन रही थी कि आपने कहा था कि हर एक वस्तु जीवों को कृष्ण से संबंधित देखो। गुरु महाराज जी, जब मैं उज्जैन थी तो आपकी कृपा से मुझे वैष्णव सेवा का मौका मिल जाता, पर जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ पर कोई वैष्णव नहीं है, पर हाँ भाव मेरे अंदर हो जाएंगी। इन तरह समझा के बताते हो। 2018 में मैंने व्यास पूजा के दिन आपके लिए एक छोटा केक बनाया था। मुझे लगा कि 2-3 साल से आप मेरा बना हुआ केक ऊपर रूम में काटते थे, जो मैं ऊपर बनाकर लाती थी, पर इस बार आपने केक काटने के बजाय केक के तरफ देखकर रूम में चले गए, तो मुझे लगा कुछ तो बात है। फिर रात में व्यास पूजा होने के बाद आपने नित्यानंद से कहा कि जाओ मम्मी को बुला कर लाओ।
और आपने मुझे बहुत ही प्यार से कहा कि देखो, मैं सुबह ही केक काट सकता था, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मंदिर में सभी को लेकर चलना है, सभी के साथ मिलजुल कर सामूहिक सेवा करना है, अकेले नहीं करना है। गुरु महाराज जी, उसके बाद जब भी मुझे कोई सेवा मिलती, तब आपकी बात को स्मरण करके मिलजुल कर सेवा करती थी। उससे मुझे यह फायदा हुआ कि मेरा संबंध वैष्णवी माता जी के साथ आपकी कृपा से अच्छा होने लगा। आपने कई साल पहले एक बार ताली का उदाहरण देकर कहा कि कैसे हम झगड़े से बचकर सहनशील बन सकते हैं। पूरी तरह अभी तक मैं सहनशील नहीं बनी, पर हाँ, इस आदेश को पालन करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आपने कहा था, भगवान के चरण कमलों को बंदर का बच्चा जिस तरह अपनी माँ बंदरिया को कसकर पकड़कर रखता है, उसी तरह मुझे भी पकड़कर रखना है। अगर मैं छोड़ दूंगी तो पतन मेरा निश्चित है। आप कृपा के सागर, दया के सिंधु हो। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उससे प्रभावित न होकर हमेशा भक्ति जीवन में बनी रहूं। सारा जीवन कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी वैष्णव की सेवा में जाए, वैष्णव अपराध से बचूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में आपकी बेटी किशोरी देवी दासी तेलारा मरद एक रोजी। आज मैं आज मैं सबकी ओपनिंग सुन रही थी, तो मेरे जो मेंटर थे हरगेश आनंद माता जी, वो मुझे रोना आ रहा था, तो मैंने कहा कि सभी वैष्णव के अंदर कितना प्रेम है और मेरे अंदर तो गुरु महाराज जी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बहुत अच्छी कही कि आप सेवा के द्वारा वो प्रेम आप प्रकट कर सकते हो। तो मैं बहुत भाग्यशाली, मैं भली वहाँ रह रही हूँ, पर यहाँ के वैष्णव ने मुझे सेवा का एक मौका दिया, इतने बड़े बड़े सन्यासी महाराज जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर ऑफरिंग शेयर करने के लिए। और किस तरह से गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि हमें आपस में एक साथ मिल के करना है, और जब हम गुरु महाराज के निर्देश को पालन करते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से वास्तविकता में हमारे जीवन में फायदा होता है। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मोहिनी राधिका माता जी, मुकुंद मुरारी प्रभु और गोपांगना माता जी। हरे कृष्ण। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। भक्ति चारू महाराज जी के चरणों में कोट कोट धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, और उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज तो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, और मेरे हमेशा उनको देखकर मुझे मेरे दिल में हमेशा उन्हीं की याद करती हूँ। गुरु महाराज जब हमारे सामने आते हैं तो हमेशा पूछते हैं, कैसे हैं आप लोग, कैसे हो, कैसा क्या चल रहा है। हमेशा गुरु महाराज मुस्कुराकर हमारा हालचाल पूछते थे। हमें बहुत याद आती है गुरु महाराज की। फिर एक बार मैंने गुरु महाराज को, जब सभी के बीच में गुरु महाराज के सब चरण छू रहे थे, तो मेरा मन हुआ मैं गुरु महाराज को गुलाब का फूल दे दूं, क्योंकि उस टाइम हम हार बना रहे थे। तो मैंने एक गुलाब का फूल गुरु महाराज के हाथों में दे दिया, तो सब गुरु महाराज ने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया और एकदम मुस्कुराकर बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लगा। लेकिन सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि आपने गुरु महाराज को डर नहीं लगा, लेकिन मैं गुरु महाराज को अपने पिता के दे दिया। और मैं बड़े सरल हैं हमारे गुरु महाराज, नम्रता से भरे हुए हैं, बहुत आदरणीय है। गुरु महाराज हमारे साथ हैं, और उनकी वाणी, उनकी क्लास के द्वारा मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा। साक्षात्कार कब होगा? तो गुरु महाराज बोले, तुम मंदिर में क्या भगवान से नहीं बात करती हो, तो भगवान का दर्शन नहीं करती हो? तो मुझे मालूम पड़ा कि गुरु महाराज से दीक्षा लेने का बहुत मौका से
मुझे भक्ति प्रेम महाराज जी ने मुझे ये मोहिनी राधिका नाम दिया, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। करते रहे और गुरु महाराज की मैं बहुत आभारी हूँ, याद करती रहती थी। और गुरु महाराज सब जानते हैं कि वो मेरे साथ हैं हमेशा। मैं गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी करती थी हमेशा। रोक दिया जाता था, लेकिन जिस दिन गुरु महाराज जा रहे थे उस दिन संयोग से जैसे मैं बुलाना चाहूँगा मुकुंद मुरारी प्रभु, उसके पश्चात गोपांगना माता जी और उसके पश्चात कीर्ति माता जी अपनी ऑफरिंग पढ़ सकते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज इति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्मीनाम चर संजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Very happy for the grand celebration, but wants to feel your hugs, head wants to touch your lotus feet, and much more. Guru Maharaj, they talk about the bliss in separation. 521. Lord Kapila Dev, a sadhu is tolerant, peaceful. He abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Srila Prabhupada writes in the fallen souls. A sadhu is calm and he quietly and peacefully follows the principle of scriptures. All these characteristics are good and touched hearts of thousands of fallen souls and gave them the gift of Srila Prabhupada, that is the Krishna consciousness. Your sweet talk was in Orlando to their satisfaction. It was awesome love feast. Guru Maharaj, I realized Ujjain, but because I was enveloped under false ego of being a civil engineer, didn't realize the tinge of gratitude of your compassion. My offenses and often cry at the Iskcon, at some other planet, in some other universe. Who knows? Guru Maharaj, now I beg at your lotus feet to forgive my offenses and be merciful to me, to be able to come out from the bondage of Maya's illusion and give me shelter at your lotus feet, so that I can be an instrument in spreading the holy name for the rest of my life. Your most insignificant disciple, Mukund Murari Das. Hare Krishna. गोपांगना माता जी, कृति माता जी और उसके बाद सीतानाथ प्रभु। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्विता वाग्मींच रसाप्लुतं प्रभुपादागतपाणा नौमि भक्ति चारुपदम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंड। आता इस गुरु महाराज जी का आविर्भाव दिवस है। गुरु महाराज जी, आपके गुणों का वर्णन करना मेरे जैसे शूद्र का प्रयास करूंगी। मेरा परम सौभाग्य का उदय उस दिन हुआ जिस पल मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके श्री चरणों में आशा और धोखाधड़ी है, कई नकली भगवान हैं। बहुत ही दयालु, शास्त्रों का सार अपने शिष्यों को प्रदान करने वाले एवं प्रत्येक प्राणी मात्र को अपना मधुर मीठा मीठा प्रेम बरसाने वाले, सारे विश्व में इस्कॉन का प्रसार करने वाले, अपने गुरु भाइयों एवं वैष्णवों का सदैव खूब सम्मान करने वाले,
एवं उज्जैन में इतना भव्य सुंदर अद्वितीय मंदिर का निर्माण करने वाले एवं अनेक सद्गुणों का भंडार श्री गुरु महाराज, आपका मेरे को स्वीकार करना, अपने चरणों में आश्रय प्रदान करना सचमुच मेरे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण है। लाखों लाखों बार प्रणाम है आपको गुरु महाराज। आपकी कृपा से ही मैं यह समझ पाई हूँ कि यह मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही मिला है, और आपने गुरु महाराज मुझे 84 लाख योनियों में भटकने से बचा लिया है हरि नाम प्रदान करके। मुझे आपकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मेरा प्रयास तो बिल्कुल तुच्छ है, मैं बिल्कुल भी भक्ति अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। जब करते समय मैं आपको याद करती हूँ। आप हमेशा पूछते थे कि 16 कभी भी कोई समस्या आती है तो मैं आपकी वाणी को हमेशा याद करती हूँ, उससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है गुरु महाराज। कि स्वयं गुरुदेव एवं श्री प्रभुपाद की कृपा से श्री हरि, श्री राधा, मदन मोहन सदैव मेरे साथ ही हैं। आपने एक बार कहा था कि अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन करी, तब से वास्तव में बहुत ही हिम्मत बढ़ जाती है। जय हो आपकी गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद के प्रति आपका पूर्ण समर्पण भाव हमें यह सिखाता है कि हम सभी को मिलजुल कर आपकी आज्ञाओं एवं शिक्षाओं का पालन करते हुए खूब खूब प्रचार करें। आपकी कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे जो भक्ति बख्शी टेबल पर छोटी सी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो आपके द्वारा ही मैं कर पाती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वह सेवा में पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं विनम्रता पूर्वक कर पाऊँ एवं श्री प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रचार में छोटा सा चींटी के जैसा सहयोग कर पाऊँ। जब भी मैं अपने सेवा के समय मंदिर में आती हूँ तो सभी गुरु बहनों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है यही मेरा असली घर है। इसके अलावा परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी आपकी ही तरह हम सभी पर बहुत कृपालु है एवं हम सभी का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं। वे नित्य भागवतम कक्षा देते हैं एवं उनका पूरा समय प्रचार में ही लगाते हैं। उनको भी हजारों बार प्रणाम है गुरु महाराज। यहाँ पर मंदिर में जितने भी भक्त हैं, प्रभु जी हैं, माता जी हैं, सभी सीनियर भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, नए नए भक्त भी हैं, सभी भगवान की बहुत ही हृदय से एवं भावपूर्ण तरीके से समय पर सेवा करते हैं। उसके कारण हमारे मंदिर में बहुत से लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह देखकर मेरा हृदय सदैव प्रसन्नता से भर जाता है। कई बार अश्रु बहते हैं। वाह भगवान, धन्य है आप, धन्य है श्रील प्रभुपाद, धन्य है गुरुदेव। सभी भक्त धन्य है जो नित्य भगवान की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है। ये गुरुदेव मुझ पर भी ऐसी करुणा बरसा दीजिए कि मेरे अंदर भी आपकी शक्ति एवं कृपा दृष्टि हो जाए। मैं भी सदैव गुरु, वैष्णव एवं श्री हरि की सेवा में अपना जीवन सफल बना सकूं। जय हो गुरुदेव। मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। प्यारे पिता हो आप, तो धन्य हो आप, आपकी तुच्छ दासानुदासी गोपांगना दासी। बहुत बहुत धन्यवाद गोपांगना माता जी अपनी ऑफरिंग पढ़ने के लिए। कृति माता जी अपनी ऑफरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद सीतानाथ प्रभु, संकर्षण निताई प्रभु और उसके पश्चात मुरारी चरण प्रभु अपनी ऑफरिंग पढ़ सकते हैं। To my dearest Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at the dust of your divine lotus feet. Our glories unto you on this auspicious occasion of your Vyas Puja. Our glories to His Divine Grace Srila Prabhupada. Every day it becomes more and more difficult for me to imagine that you left me for always, because whenever I get some time, I love to rewind all the memories in my head, feeling every moment of it, and hence they are still so alive and close to me. But at the end, I cry for hours, experiencing their finiteness and no hope for more. But I gain more of them by listening to your classes
which heal my soul and take me to a different world, forgetting my surroundings. Now I realize that I love them the most, but still, to my despair, I feel the inability to no more be able to listen them live. I was blessed with the lots of your association, but stupid me took them so lightly, being attracted to pleasures of life. But today I die even for a second of them. I try my best to be strong and face problems boldly as you taught us. Please keep on blessing and helping me because they become so difficult for me to handle at a point of time. You will be happy and pleased to know that this Janmashtami we on a separate stall, matchless gift, sold 190 small books, but beyond numbers, everyone had their doubts clear and was happy with our genuineness. Secondly, recently I had a MRI scan of brain and reports were all positive. Injuries are almost healed, but medication will continue for some years to get rid of seizures for lifetime. Day by day, I realized that through this accident, I received greatest blessings. First of all, it is you saving me by showering your loving blessings. And secondly, is the experience of the worst, which helped me love Srila Prabhupada and you more and more every day for a wonderful gifts to us. You told us that you prayed to Lord to save me for doing bhakti, and sincerely, now I feel more attracted to it day by day. Please bless me to properly follow your footsteps and become your true followers. Since you told us that through love we can feel every time, we can feel you every time. Please let me develop that love to have your constant presence in my heart when not feeling your physical absence so much. Guru Maharaj, please let me be always there in Iskcon, serving you and Prabhupada, and never allow me to deviate from this wonderful path. Your most insignificant servant, Kriti Dasi. Thank you, Mataji, for reading your offering. Then Sitanath Pro अपनी offering पढ़ेंगे. उसके पश्चात ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, फिर संकर्षण निताई प्रभु अपनी ऑफरिंग पढ़ सकते हैं. नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टे भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसरणी निर्विशेष शून्यवादी भाषत्व देश धारिणी नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टे भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामिनी स्निग्ध चेत सुपर्णित अग्निच रसफलतम प्रभुपाद गत प्राणम भक्ति सर्वपदम. Please accept my humble obeisances. All grace to Srila Prabhupada. I don't have any good quality. How kind you are to accept me as your disciple. I am so fallen, totally unqualified. Guru Maharaj, because you have followed Srila Prabhupada strictly in this way, you have helped many devotees to become fixed in their Krishna consciousness. On the how always remember Krishna and never forget him. Guru Maharaj, you are an expert in art of bhakti, singing, cooking, playing instrument, film making, translating Srila Prabhupada books. You are real Srila Prabhupada Anuk. I do not know English so much. By your Bengali translation, I understood Srila Prabhupada books. Not only me, all Bengali people are coming Krishna consciousness by reading Srila Prabhupada books. All devotees are very grateful to you.
they glorify you for the next 10,000 years. Guru Maharaj, whole world knows very well how dear you to Srila Prabhupada. You are teaching the whole world the importance of following Srila Prabhupada. Your words are always simple. You always have the perfect example. Your divine grace is instructing all the disciples to stay in Iskcon, accept Srila Prabhupada, the GBC is the ultimate authority, and to take shelter of Srila Prabhupada and take shelter of all advanced devotees in Iskcon. Your instructions inspire all to take full advantage of Iskcon. Srila Prabhupada is the Jagat Guru and the spiritual master of the whole world, and you are his sincere and surrendered follower. O Guru Maharaj, you are not anybody in this material world. You have come from Golok for getting back to us for Maya. Krishna sent Srila Prabhupada to this world to spreading in his mission. So you do not know nothing but Srila Prabhupada. By your mercy, I am trying to distribute Srila Prabhupada books all over MP. Many people are taking Iskcon books and reading these books. They becoming Krishna consciousness. Please bless me so I can serve you by your Bani form. Let your instruction my life and soul. I can serve all devotees without offense. I can chant offenseless and I can follow for rules and regulations strictly. Your servant of servants, Sita Das. Hare Krishna. हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सीतानाथ प्रभु अपनी ऑफरिंग पढ़ने के लिए। प्रभु जी कई वर्षों से ग्रंथ वितरण कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश। श्रीला गुरु महाराज जी का विशेष निर्देश है उनको, तो बहुत अच्छा उन्होंने ऑफरिंग रीड किया। तो नेक्स्ट विजेंद्र कृष्ण प्रभु will read his offering to Srila Guru Maharaj. After that, Murari Charan Prabhu, Sankarshan Nitai Prabhu, they can be ready to read their offerings. Dear most Guru Maharaj, please accept my most. On this most auspicious day of your divine appearance, I wish to express my little gratitude to you. Your Holiness always wanted us to become a very sincere devotee of Krishna. You always tried so hard to make us sincere, but it's the shortcoming of our part that we couldn't take your instructions with full seriousness. In one of the video clippings which got viral few months back, Your Holiness mentioned that to be a spiritual master is a very serious responsibility, and with full seriousness, Your Holiness took that responsibility to the extent that you were even ready to take all of our karma and ready to accept all the suffering which actually belongs to our part. How can someone be so compassionate as Your Holiness is? Before leaving the planet, you made all the arrangements for us to smoothly practice bhakti. The temple campus, which is 1.46 lakh square feet, at the rate 7,000 rupees per square feet, costs 100 crore at the present rate. And if we take 100 crore construction cost, then it means rupees 200 crore gift in the form of fully constructed temple is given by Your Holiness to all of us. When I see that outside people are so hardworking for their material goals, then I look at myself and feel pain that I am so lethargic as compared to them. I have so less enthusiasm to serve Your Holiness. You made so many sacrifices for Iskcon and Srila Prabhupada, and I mostly step back when it comes to make a sacrifice. You always try to make us understand. Previously, I heard many Bollywood songs
which talk about selfless love, but haven't seen any boy and girl experiencing such true selfless love between them. The purest love which I have ever seen is between of your commitment and love for Srila Prabhupada. Only a pure master like Srila Prabhupada can attract a pure servant like Your Holiness. It's beyond our imagination to understand that how much you loved Srila Prabhupada. I also thought of giving some updates from my life in the last 1 year. In October 2021, I completed the GBC College Journal Supervisor course as per the instructions of Your Holiness in March 2020. In July 2022, I was assigned the responsibility of secretary in TSCS, that is Team for Sannyas Candidate Services, which opened my doors of fortune to associate with many sannyasis and aspiring sannyas candidates. I have also completed 6 years in Iskcon Ujjain management. Definitely there were many ups and downs, but by your mercy the difficulties never lasted for a long time. By your causeless mercy, I am able to continue worshipping the deities during Mangal Aarti, and I wish to never leave this seva, which greatly helps me to keep the consciousness on track. When I go inside the altar, I feel that Krishna has so mercifully descended in his deity form because the call came from his pure devotee like you. Once you told in a class that one should offer all the love in one's heart to the deities and we will achieve tremendous satisfaction. Such statements give a lot of hope to the struggling practitioner like me. I always pray unto your lotus feet that this license to worship the deities remain fresh and I may never be bereft from the service to the deities. Guru Maharaj, since long time I had a strong desire to offer you an anartha free heart, but it seems to be a very difficult task. It seems to be as difficult as cleaning the Pacific Ocean. For this also I am dependent upon your mercy. By my efforts alone it's impossible, but as the scripture says that the impossible becomes possible by the mercy of the spiritual master, and I have faith on the Shastric statements. I can see how happy are those who have fully surrendered themselves unto your divine lotus feet, and I also derive great inspiration from them. But still, to fully surrender seems miles away because of the deep rooted independent mentality. But I will not give up, Guru Maharaj, and will try again and again to take full shelter of your lotus feet. Your causeless mercy is my only hope. Your servant, Prajen Krishnadas. Thank you, Rajan Kishro, for reading such a nice offering. Prabhu is a temple president, but he is so involved in management activities, but still Prabhu takes out his time, do daily deity worship and setting a wonderful example for all of us. Now I would like to invite His Grace Murari Charan Prabhu, then Chitta Hari Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Charu Swami Namini Snikcheta Suparneta Vakmin Amchara Saplutam Prabhupada Gat Prana Nome Bhakti Charu Padam. You, in words of your God brothers, Guru Maharaj, you are a rare jewel in galaxy of Vaishnava devotees. You are a perfect gentleman, cultured and decorated with ornaments of Vaishnava etiquettes. You are Prabhupada's man. Whatever you do it for Srila Prabhupada. You are expert in 6 loving exchanges
so loving and caring, personally cooking and serving them. With big smile and big heart, even in most critical condition, you used to make whole situations sweet and calm. You have extraordinary love for Srila Prabhupada that while initiating you said many times, even if I leave Iskcon, you never leave. We always remember three instructions given to you by Srila Prabhupada. First, never ever leave Iskcon. Second, GBC is the ultimate authority. Third, your love for me will be shown. How do you cooperate with each other? Are you comfortable? Have you got enough facilities? Have you taken prasadam? These are the questions which you ask to guests and devotees, which shows the epitome of caring and serving. Guru Maharaj, you want everything perfect and genuine. You don't accept even flowers offered with half-heartedly. You want complete surrender. Either commit or quit. Also, you repeated again and again, give this one life to Krishna. Your kirtan is so simple and from heart, and so you want from devotees to sing from heart. I came to know that how are you a perfect and loyal disciple of Srila Prabhupada, as these three are the duties of disciple mentioned in the scriptures. First, spreading glories of Guru. You made Abhay Charan series, and in each and every lecture, name of Srila Prabhupada was mandatory and natural. I heard once in Ujjain you forgot to mention Srila Prabhupada's name in a lecture while purchasing land, and you wrote a sorry letter to Srila Prabhupada for it. Spreading divine knowledge of disciplic succession, you translated Prabhupada's English scriptures into Bengali. Without any deviation, throughout the life you preached vigorously the message of Srila Prabhupada. Conserving and expanding divine heritage. Third, like Ujjain temple, you constructed many temples, cultivated thousands of devotees, you protected many properties of Srila Prabhupada, that is in New Vrindavan, New York, etc. Once His Grace Sitanath Prabhu told how Guru Maharaj is so frugal that he couldn't use toothpaste even a single time after he threw it. His Grace Arunax Prabhuji told how intimate relationship you have with deities that even a slight change in position was detected and corrected by you. In words of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, Srila Prabhupada's pastimes are ever eternal, and so surrendered Bhakti Charu Swami Maharaj yours. As Prabhupada took physical challenge after warned by Ayurvedic doctor for the sake of preaching, same way you took. Before going to ventilator, you asked if GPC wants or not. So surrendered to GBC and Srila Prabhupada. In words of His Grace Radha Vinod Prabhu, you don't like any type of groupism. You invested so much love in Ujjain temple that I can feel personally. When you appreciated me for good rank in quiz and motivated my brother for devotion, it was a great inspiration for me during lockdown. In words of His Holiness Prabhupada Swami Maharaj, just like Hanuman tears out his heart and Ram appears, same way Srila Prabhupada will appear in your heart. You made the verse Tava Katha Amritam famous in glorification of Srila Prabhupada. You have very sharp memory and never forget even a little service in the moment of Srila Prabhupada. In words of His Grace Devkinandan Prabhu, you have very innovative ideas to facilitate devotees. You are very kind-hearted, even disciples
and devotees cheated you by helping in business. In words of His Holiness Sachinandan Swami Maharaj, you are perfect in everything. Even in Germany, how you repaired car with cane and you have lecture, you gave lecture to difficult Christians in Germany, and every time they felt connected. Just like clouds, you pour water everywhere. Like ocean, you are deep in thoughts. You are steady and strong like Mountain Meru. I heard that you and His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj were such gentlemen that even Srila Prabhupada could not leave his body in front of you. In words of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, even in midnight till 1 a.m., you used to translate books in small office. When you both used to sleep in one room, you were serving till several days. When His Holiness Radhanath Swami Maharaj was in critical health condition, you said, I am here with you throughout night. So what really a devotee care? You are the perfect example for it. It can be learned. Even being GBC, sannyasi, you have transcendentally motherly affection. You said to Radhanath Swami Maharaj, why are you leaving for Gadadhar Bhavan? Stay with me, I will take care. In a zone, you could take strict action while in preaching, but you thought Srila Prabhupada might not be pleased. And you did not do that. Dear Guru Maharaj, I am fortunate enough that I was able to take your Vapu association till more than 2 months in Ujjain. I was releasing nectarian classes regularly that helped me a lot in spiritual path. Guru Maharaj, we have our plans, you have yours, and Krishna has his plans. I tried to pray a lot, but you went to Srila Prabhupada. At the time of your disappearance, my heart was totally broken, melted not because of my immense love, but due to intense love of your disciples at Ujjain. As soon as we got news of your Vapu separation, I saw that His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj became stunned, motionless, and started to cry. Practically, even devotees from child to among your first disciples were crying in an unbearable separation. It seemed that all have become orphans. His Grace Arunax Prabhu was singing Jai Anilo Premadhan from the core of the heart, and feeling of separation became more intense. Through ocean of mercy, I came to know that although devotee separation is highest loss, still Prabhupada said this is not mine or Bhagavad Gita's teaching. As soul changes body, and thus I was giving condolence to myself. I thought I have a lot of lust desires. I am so impure, so I don't have any right to become sentiment and cry. If I have not joined temple, I would have been totally devoid of pure devotion. Even in bhakti, I was seeking shelter in external qualifications. More closer I come to devotees, more authentic, bona fide, natural, genuine, pure process I find it. Please allow me to serve you and your loyal devotees, your insignificant servant Murari Chandas. Haribol, thank you very much, Murai Charan Prabhu, for reading such a nice offering to Srila Guru Maharaj. Next, Chittahari Prabhu can share his offering. After Chittahari Krishna Prabhu, Apur Gopal Prabhu can read his offering to Srila Guru Maharaj.
हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी निति नाम स्निग्धचेतः सुप्रणीत वाङ्मिनं चरसाप्लुतं प्रभुपादगतः प्राणनौमि भक्ति चारु। Dearest Guru Maharaj, please accept my most humble obeisance unto the dust of your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your holiness. I feel myself most fortunate that your holiness appeared in my life and awarded me your most loving shelter. It is your causeless mercy only that you showered so much love and care upon a fallen soul like me. Your sudden departure from our material vision was a big disaster for us, but personally, I am feeling that your holiness is always there to guide me in my spiritual journey. Not only that, your holiness had made all the arrangements to protect our spiritual life, like your dedicated followers, especially His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj for me, as he is guiding me in my spiritual life. Beautiful Iskcon Ujjain, and most importantly, your transcendental Vani, which contains all the teachings to help us to go back to Godhead. Also, after your departure, we could see that your many God brothers and senior devotees shared your glories, pastimes with us. By their so loving offerings, I could know that how deeply you have touched the hearts of all these devotees through your exemplary behavior, loving service, and inspired them by your utmost surrender to Srila Prabhupada. But in spite of all these wonderful arrangements, I am not able to practice Krishna consciousness seriously and committing many mistakes in services or sadhana. Devotees are tolerating me and patiently waiting for me to grow spiritually. Especially one of your most loving disciples, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, has showered lot of unconditional love upon me and continuing to guide me in spite of my many failures to follow his instructions. Guru Maharaj, as per my little intelligence, I remember that you liked our CA program held in 2019 and instructed me to cultivate them. Also, you instructed me to preach to Sindhi community in Spain as you were too busy to give much time there. His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj has also given similar instructions to me, but I am unable to follow them. Please bless me so that I can preach nicely to please your holiness and Vaishnavas. I wish to express my gratitude unto you with few words. Loving like a mother, protecting like a father, our whole existence only you are rather. Your holiness came from spiritual sky to save us. Srila Prabhupada's divine gift, your holiness gave us. Dedicated followers, Iskcon Ujjain, Abhay Charan, book translation, and so on. Your only concern was to establish Srila Prabhupada's position and save Iskcon. We miss you and will miss you, trying to serve your instruction, hoping to see you again. Someday you will take us to destination. By accepting this fallen soul, you gave me a great chance. Please keep guiding me, bless me with your merciful glance. But often I drift to Maya, like a person deaf and blind. Please bless me to become an surrendered, obedient child. Please bless me so that I can follow your instructions nicely and serve in this glorious moment of Srila Prabhupada whole life. On this auspicious day, I beg forgiveness for my countless offenses committed unto your lotus feet. Please allow me to become and always remain a humble servant of Vaishnavas, aspiring to be your servant, Chitta Hari Krishna Das. Shri Bhakti Charu Swami Guru Maharaj ki. Hare Krishna. Thank you very much, Chatta Hare Krishna Prabhu, for reading your offering to Srila Guru Maharaj. One thing I want to say, Prabhu. I want to beg forgiveness unto all devotees during my MC services because as per authority instruction I tried to serve, but with my little intelligence I
must have committed many mistakes. So please forgive me and bless me. Hare Krishna. Very good. Pro did wonderful MC service. So next is Apur Gopal Pro. He will lead the offering. अभी कुछ देर में यहाँ पे एक डांस प्रस्तुति होगी जो कि
Dear Guru Maharaj, please accept at the dust of your divine lotus feet. All glories to Srila, all glories to you. I have been so fortunate to be under your shelter since my childhood, and you have always encouraged me in every way. Since my early teens, when I would share with you my writings, you would respond so beautifully, inspiring me to share my realizations. When I was 15 and we read some of my poems to you, you instantly said that we should publish a book out of them. And you wrote to me, your poems were so full of realizations and feelings. I would very much like to see them printed. In a later year, you again said, I'm waiting for your book to come out. Guru Maharaj, with all your encouragement, I kept writing over the years, pouring my heart out, while living with my grueling illness. When you were in the ICU battling with COVID, and everyone was praying and chanting for you to get better, I felt that my prayer for you was to write. I was pouring every ounce of my love, prayer, and energy into writing my book in the hope of taking forward your mission to serve Srila Prabhupada. I hoped that when you would come out recovered, I would offer it to you as a gift. Of course, that never happened, but I had decided that I would dedicate that book to you. And whenever that book comes out, I'm sure it will have your special potency of love in it. But today, Guru Maharaj, on your beautiful and special Vyas Puja day and Srila Prabhupada Memorial Festival, I, along with my family, have a special gift for you. My first book, my journal from the year 2019 and 20, is soon going to be ready for print, and we hope to present it to the devotee community in this coming month of Kartik. Guru Maharaj, whatever I am today is because of your mercy and love and the nourishment you provided me every day of my life. You have so graciously accepted the littlest of things we ever did for you. So taking from your own ocean, I am offering this little gift to you today. And I cannot even imagine how happy you would have been hearing about my book coming out, and what a beautiful response you would have given on it. It is a huge loss for us that you are not physically present today to receive this offering from us. But I know that you are watching us and giving us your blessings and love. We really miss you, Guru Maharaj, and I cannot wait to meet you one day and offer this book to you with my own hands. If you were here, I would have requested you to write the foreword to it. Thank you very much, Guru Maharaj, for making my life so beautiful and meaningful, for blessing it in every way, and making me capable of rendering some service to all of you. Wish you a very happy Vyas Puja, dear Guru Maharaj. With lots of love, your granddaughter, Madan Mohan Mohini Dasi.
फिर कुछ उनके फॉलोअर्स ने इसको लिखा है। तो ये परफॉर्मेंस, ये भजन ब्रज भाषा में है, श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने इसे गाया है। और मेरी बेटी महाराज के आशीर्वाद से, मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से श्रील राधानाथ स्वामी महाराज की डिसाइपल हैं सुंदरी राधा। वो शी इज़ अ अकम्प्लिश्ड इंटरनेशनल उड़ीसी परफॉर्मर। तो उनसे पिछले 1.5 साल से उड़ीसी सीख रही है। आप आशीर्वाद दीजिए कि सत्यभामा और अच्छे से सीखे और श्रील प्रभुपाद को और जगन्नाथ को ये ऑफर कर सके आर्ट को। तो सीता सुंदरी राधा को मैंने शेयर किया कि श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की व्यास पूजा है सितंबर में। मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये इच्छा है कि हम ये ऑफर कर सकें ऑफरिंग ऑफ उड़ीसी डांस। एंड सीता फेल्ट इन लव विद दिस सॉन्ग, विद दिस भजन व्हेन शी फर्स्ट हर्ड। तो हालांकि सीता इज एक्चुअली इस्कॉन की ही बच्ची है, उसके पेरेंट्स इनिशिएटेड बाय श्री राधानाथ स्वामी महाराज हैं। वो गोपाल्स गार्डन मुंबई की स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने कभी ये सॉन्ग सुना नहीं था। द फर्स्ट टाइम व्हेन शी हर्ड इट शी सेड आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस सॉन्ग। और then she took a whole workshop to train Satyabhama for over 5 months now. So normally Satyabhama is a bit shy girl, but Ujjain में वो बहुत अपनापन फील करती है। She is 8 years old, मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा लव करती है। उज्जैन में जिनको भी वो जानती है, लेकिन स्पेशली His Holiness भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को, she has very deep love for him and I'm very grateful to Srila Prabhupada कि उसके हार्ट में ऐसे जेन्युइन साधु के प्रति प्रेम है। एज अ फादर मेरे को लगता है कि मेरा काम हो गया है, क्योंकि भक्ति प्रेम महाराज के चरणों में उसके प्रति प्रेम जागृत है, तो अब उसका कल्याण ही होगा। सो आई एम वेरी ऑनर्ड कि आज आप सब ने सत्यभामा को और मुझे ये अपना हृदय, ये ऑफरिंग श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करने का सौभाग्य दिया है। ऑफ कोर्स हम दोनों, मेरे स्पीच में और उसके डांस में त्रुटियां होंगी, बट प्लीज़ ब्लेस करिए कि हम और वो खास तौर से कि उसके जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को खूब प्रचार कर पाए, और जो थिक शुद्धता हमारे हृदय को टच करी है श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज और उनके गॉड ब्रदर्स के प्रचार के द्वारा, उसका एक बूंद की शुद्धता वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो थैंक यू सो मच। आई वोंट टेक एनीथिंग लॉन्ग। we'll start Satyabhama's performance. Srila Bhakti Charu Swami Guru Maharaj Vyas Puja Mahamahotsav ki jai. Yeah, I'll just check. Yeah, I think it'll work out, Maharaj. Yeah. Come Satyabhama.
हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवाना है तो गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवाना है तो गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, चरण धरी पछारे, चरण धरी पछारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल। द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछारे, द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछारे, चक्र से ग्राहों को मारे गजराज को उधारे, गजराज को उधारे, गजराज को उधारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल।
काहे श्याम सुना शरणई तोहारे। सुर काहे श्याम सुना शरणई तोहारे। अब हमारे पार करो है नंद के दुलारे। नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गो शरण अब तो जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे याद आ रहा था कि जयदेव प्रभु गुरु महाराज के बहुत ही प्रिय हैं। और 2019 में जब व्यास पूजा के समय 16 सितंबर 2019 में बहुत अच्छा एक ड्रामा तैयार किया था, ओशन ऑफ मर्सी, जिसमें कि किस तरह गुरु महाराज के बचपन से लेकर श्रील प्रभुपाद से उनका मिलना, इस बारे में एक मास्टरपीस जयदेव प्रभु के मार्गदर्शन में तैयार हुआ था, जो गुरु महाराज को बहुत ही पसंद आया। और गुरु महाराज ने बोला कि जयदेव प्रभु इज अ जीनियस। और सारे इंदौर के भक्तों ने उस नाटक में भाग लिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव प्रभु। अभी इसके बाद गौरांगी गोपिका माता जी अपनी ऑफरिंग पढ़ने के लिए आ सकती हैं। उसके बाद राज शिवहरे प्रभु थोड़ा तैयार रहें। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेत वाग्मीनां च रसावृतं प्रभुपादगत प्राणं नौमि भक्ति चारुपदम। श्री गुरु महाराज की जय। Dear most Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances at the dust of your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your divine holiness. Respected dear Guru Maharaj, on the very auspicious occasion of your Vyas Puja, I am offering you my deepest gratitude as a most purifying service, that is your glorification. Please forgive me if you find anything inappropriate in my speech. By the divine mercy of Srila Prabhupada and Guru Maharaj, I have received Iskcon Ujjain temple as the best gift for this lifetime, which leaves me my life in abundance happiness. You always taught us to keep Krishna is in the center, which I personally find very helpful in devotional life while dealing with different level of devotees. I remember once you blessed me by your divine words saying, you will become an expert in all the services, and I do feel your blessings manifesting in services that I am rendering at present for the pleasure of Shri Radha Madan Mohan Ji. You have saved me from living an animalistic life. You have given me most perfect thing in the most perfect way. Since childhood, I have always amazed by your loving and caring nature. As you always said, one must recognize the Vaishnav community is the community of lovers. The very basis of Vaishnavism is love, love for Krishna and love for the devotees. I am trying Guru Maharaj, what I have received from you to give others too. I know sometimes I fail to act according to what you have taught me, but sincerely Guru Maharaj, I am trying. Please bless me so that I can continue this life fulfilling your instructions, fulfilling your vision for me. Although you are not physically present here, but still you are inspiring, guiding, encouraging and motivating all of us by so many ways. Please always keep me in your divine shelter and blessings. I miss you so much, dear Father. Your most insignificant daughter,
and fallen servant Gaurangi Gopika Dasi. हरि बोल। आप लोग ने मदन मोहन ललित विशाखा कृष्ण वरण को निताई को केशव विन्यास समझते जो देखते हैं वो गौरंग गोपिका का है। ज्वेलरी भी है ना, ज्वेलरी तो कोई भी बना सकते हैं, लेकिन एक केश बनाना ये सीखना बहुत कठिन काम है। मोइथिली माता जी रशिया से आए थे तो उन्होंने सीखा कि किया है, तो इसीलिए अलग अलग मंदिर के विग्रह के साथ हमारे मंदिर के विग्रह का केश का थोड़ा डिफरेंस पता चलता है। तो इतना सुंदर रूप है गौरंग गोपिका के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। इसके बाद राज शिव हरे प्रभु अपनी ऑफरिंग पढ़ें और उसके बाद हिज ग्रेस प्रेम रूपा प्रभु राज शिव हरे प्रभु जो है अभी IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष पहले यहाँ से इस्कॉन उज्जैन से जुड़े युवा प्रचार के द्वारा, और लॉकडाउन के समय 3-4 महीने यहीं पे रह के IIT की पढ़ाई की तैयारी भी की, और वर्तमान में IIT दिल्ली में फर्स्ट ईयर में हैं। और हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु के साथ वे बहुत सारे जो जन्माष्टमी फेस्टिवल भी मनाया IIT दिल्ली में, और विप्लव प्रोग्राम वहाँ पे भी ड्रामा के लिए तैयारी कर रहे हैं। नमो हरि बोल। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चरु स्वामी निते नामिने स्निग्ध चेता सुप्रणीता वाग्मी नाम च रसाप्लुतम प्रभुपाद गता प्राणा नौमी भक्ति चारु पदम। Dear Guru Maharaj, I remember when I was just a 14-year-old kid in 2016, completely unaware of devotees and Iskcon. I was passing by with my family from the road in very front of our temple in a car. I had a glance at the beautiful temple you have built. That picture is still in my mind. I can remember a Western devotee in saffron dhoti kurta chanting on beats. So after this incident, few months later when I was in my hometown in Maxi, so for some reason I was beaten up by my mother for some of my silly mistake. And at that time I was so angry that I decided that I'll leave my home and I'll go somewhere else. But the question was, where will I go? So suddenly that image came in my mind and I decided to mail Iskcon Ujjain. I dropped a mail saying, I want to stay in the lotus feet of the Lord and serve. I want to join Iskcon and stay in temple. I got a reply by some of senior devotee asking me about my age. And I replied, I am just 14-year-old. He said, please wait for another 5 years and then we will be very happy to see you joining Iskcon temple. After this, I dropped the idea to leave my home and I got busy with my daily life, completely forgot about this conversation. But Guru Maharaj, I think 5 years later, you have accepted my letter. And exactly after 5 years, Your Holiness brought me back to Iskcon. Guru Maharaj, although in this life I never had your Vapu Darshan, but I feel a deep connection with you within my heart. I can see your interference in my life, that you built this temple, you gave us so loving and caring devotees. And I can see it's by your mercy, through your disciples, through your devotees, that I could stay in temple for nearly 3 to 4 months and prepare for my JE. And during the lockdown and clear the IIT examination. It was your mercy through your disciples that you gave me shelter in your quarters in Mayapur for 1 long month during Gaur Purnima. And I could get darshan of so many of Prabhupada disciples and sannyasis and serve them in this life. I remember every day I used to visit your Samadhi Mandir and sometimes there were tears in my eyes, thinking how unfortunate I am that I couldn't see you, couldn't have your Vapu Darshan in this life. Guru Maharaj, you have given me so much. This beautiful temple, so many loving and caring devotees, especially the culture of love, humility and interpersonal relations, which you are known for all over the world of Iskcon.
I have nothing to offer you back. Only thing I can offer you onto the dust of your lotus feet is myself. So Guru Maharaj, please give me strength to surrender myself. Never forget my roots and utilize all my achievements and talents in your and your devotees' service. Your loving son, Raj. Thank you very much, Raj Shivhari Prabhu, and mentioning how Krishna responded to your call at the right time. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप पूरा जीवन श्री श्री राधा मदन मोहन के चरण कमलों में अपना समर्पित करें. इसके बाद हम इस ग्रेस प्रेम रूप प्रभु से इस ग्रेस प्रेम रूप प्रभु की वे आए और IIT BHU से Premarup Prabhu is pass out of MNIT Allahabad and he worked for Oracle and recently he joined PDC course in Iskcon Pune. He is serving in Iskcon Varanasi under His Grace Achyut Mohan Prabhu. And he is preaching in MNIT Allahabad. MNIT Allahabad में youth preaching करते हैं और प्रभु जी Oracle कंपनी में काम करते थे और अभी पुणे इस्कॉन मंदिर में PDC ट्रेनिंग कर रहे हैं. आज इनका जन्मदिन भी है. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी इति नामिने स्निग्ध चेता स्वप्रणेता वाग्नेम नाम चरसाप्लुतम प्रभुपाद गत प्राणा नमामि भक्ति चारु पदम. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Hare Krishna. So, this is my humble attempt to glorify the unlimited qualities of Guru Maharaj. So, I have written a small poem. So, the title of the poem is Captain of Prabhupada's Army. When the material civilization was reaching its peak, making life comfortable yet heart burning with material heat, then spiritual vision of life was attacked by Kali Yuga's army, making sense gratification goal of life and spiritual lethargy. The world was in dangerous situation and there was no intuition. There appeared the great commander-in-chief of Lord Chaitanya to fulfill the will and prediction of Lord Nityananda, that the name and message of Gauranga will reach every town and village, and Srila Prabhupada was given this divine privilege to carry this message all over the world. Just as descent of Krishna is accompanied by his associates, Srila Prabhupada appeared to fulfill Chaitanya's mission with his close associates. You have always taught us about these facts, glorifying all of Srila Prabhupada's sons and daughters. You are the worthy son of Srila Prabhupada and the captain in the army of Prabhupada. Carrying the same mood and mission of your master, you have distributed Krishna consciousness all over. Loyalty to the master is your power, smashing all deviations to powder. Ultimately, we are Prabhupada is what you have always taught. Uncountable are your contributions to Iskcon. Be Abhay Charan, Bengali translation, Founder Acharya, Vaishnav etiquette, D-Land or Ujjain. But more than anything is your personal example of a great devotee that charmed the heart of so many. Ruffians and gentle, man and woman, children and old, Indian and abroad. You are personal and caring and relevant to all. Keeping Iskcon united has been your mission, preaching everywhere this intention. So much so that you ask this vow even in initiation to strengthen Lord Chaitanya's mission. Hosting your God brothers and God sisters with so much love and care, you taught how much each and every of Srila Prabhupada's disciples are so rare. Value and respect them more than you is what actually pleases you. Such non-envious, thick and loving relations
are actually for us spiritual words darshan. Attacking the army of Kali Yuga to dispel the darkness of ignorance, you never compromised to establish the truth in all spiritual sessions. Especially empowering are your seminars like The Art of Dying, Uddhav Gita, Krishna's pastime from Garg Samhita, and so many. Focusing on the teaching, Focusing on teaching the philosophy to your children with so much effort and sacrifice only showed your concern for each of us and no compromise. So much so that you marched even to America in such difficult time to inspire your children and kill Kalyuga and give Kalyuga tough fight, teaching all your children to dedicate this one life and see Krishna's mercy throughout life. Just as the test of tree is by tasting its fruits, your glory is revealed by your glorious daughters and sons. Blessed are we to receive association of some of them like Bhakti Prem Maharaj, Arunaksh Prabhu, Rajendra Krishna Prabhu, Abhay Charan Prabhu, Krishna Kishore Prabhu, Vamshidhari Prabhu, Radhapat Prabhu, and so many. In your physical absence, we were in despair, but so much did they give their love and care. You are the cuckoo of Iskcon, as glorified by your God brothers. Your Kirtans have always taken us to a different realm, like a glimpse to a spiritual realm. Vaishno songs by you are so unique, glorifying Krishna with so sweet. Fortunate are we to be under your protective umbrella. Fools are we to even think to repay. But strong determination, loyalty, and service attitude are our prayers to you. Dedicated service and humble instrument of compassion at your hands. Practicing pure devotional service are blessings we seek from you. By your mercy have we received the opportunity to serve in Varanasi and Prayag Dham, the place of Roop, Sanatan and Prabhupada. Please bless this community with your mercy and bless us to wholeheartedly serve in Prabhupada's army. Of course, the first token of your mercy has already been received by us by receiving the regular association and shelter of Bhakti Prem Maharaj upon us. Fortunate is every soul who comes to Iskcon, where glorious personalities as you have given your life, mind, body, and words for preaching the Lord's mission and actually beginning way to everyone's eternal destination. Obeisances to the lotus feet of glorious captain of Srila Prabhupada, whose coming and leaving are inspiring forever and divine. Your aspirant servant Prem Rup Das, Iskcon Varanasi. Hare Krishna. Thank you, Prem Rup, for reading such a nice offering to Srila Guru Maharaj. तो ये जो शिला प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल और 77th व्यास पूजा हमने सेलिब्रेट करी गुरु महाराज की, उसमें ऑनलाइन इवेंट भी हुए थे, तो जिसमें बहुत सारे भक्त लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें अलग अलग भक्तों ने कुछ वीडियोस बनाए थे, कुछ फोटोज बनाए थे। तो एक बहुत सुंदर वीडियो आप लोगों के समक्ष यहाँ प्रस्तुत है, उसमें से जिन्होंने फर्स्ट प्राइज मिला है जिस वीडियो को। A 70-year-old
A 70-year-old devotee of Krishna went to America in a cargo ship in 1965, and after an enormous struggle, he established an institution with a handful of young Americans. With them, he started this International Society for Krishna Consciousness. Within the short span of 11 years, Srila Prabhupada not only spread this movement practically through all the countries of the world, but he established 108 temples in all the major cities of the world. And this is how we can see that in order to fulfill his prediction, Sri Chaitanya Mahaprabhu reserved the credit to one of his most intimate devotee, and that is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I come from India. We grew up with the idea that the West is the best. I went to Germany, and there actually I developed my appreciation for Indian culture, and I came back to India. I was searching for a spiritual master, and I became so disappointed after about 1 year of search that I decided that I'm not going to search anymore. If I do have a spiritual master, then let him come and pick me up. From the very first page, I recognized that this is what I was looking for. Prabhupada very boldly declared that if you want to know about God, you can come to me. I can tell you what his name is, what he looks like, what he does, where he lives, and I can give you all information about him. Vachanam madhuram charitam madhuram. Prabhupada told me, you translate my books into Bengali. And that opened up the gate of my good fortune. Madhuram brahmitam madhuram. When you find something very precious, you want to share it with those who you love. It took me exactly 9 months and 20 days to build a temple. I started off by feeding 25,000 children. Every day I had to make 75,000 chapatis. সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে
উদয় মম গেলা তুয়া ও পদ বর তব কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ধীরিতা কলমশাপহ তব কথা কবি ধীরিতা কলমশাপুরিদা জানা শ্রবণ মঙ্গলা শ্রীমদাততা ভুবি গৃহ্ণন্তি যে ভূরিদা জনা জয়তি তেধিকং জনমনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা শাশ্বদাত্রহি জয়তি তেধিকং জনমনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা দীক্ষুতাবকা তৈ ধৃতা সবা তাং বিচিন্নতে দ্বৈত
Forgot this instruction. Every year without fail, he is coming in our this festival. He is staying after 1 hour. Just I am requesting it. मधुरेश प्रभु की मधुरेश प्रभु ने प्रद्युत में बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं और बहुत एक भक्त कम्युनिटी बनाए हैं। अरे बार 20,000 भक्त आया था जन्माष्टमी और प्रसाद भी लिया है और 25 भक्त साथ में आए हैं। जो सबसे आश्चर्य का बात है, जो परिवार आया है उनके सब बोले मधुरेश बोल के हमारा बच्चा रहना चाहिए। अभी आधा घंटा पहले मेरा भ्रमण है, सब पिता माता बोले मेरा बच्चा मधुरेश की तरह होना चाहिए, उनके साथ मंदिर में रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नितिनामिने स्निग्ध चेता सुप्रणीता अग्निनाम चरसाकृता प्रभुपादगत प्राण नौमी भक्ति चारु स्वामी पादम। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I don't have much practice speaking in English because I am preaching in Telugu speaking area. Still I try because Maharaj ordered me. Just now I told I can't speak. Just to please Maharaj and all the assembled devotees, I try. In 2002, I was in Hyderabad University. Then one devotee gave me Bhagavad Darshan BTG. First I saw Srila Radhanath Swami Maharaja's photo in that Bhagavad Darshan. I was wondering, these American people, why they are coming to India? What? Everyone wants to go to America. First thing I opened, I saw Maharaj's photo. Then that devotee kept on giving me small books, at least 10-15 small books I read. That time Guru Maharaj came to Hyderabad, 2002 June or July. Then I went to temple. Then Hyderabad temple organized one public program with Guru Maharaj. The title is Bhagavad Gita, scientific basis of Bhagavad Gita. Then I was Bhagavad Gita, science. How is this matching? Then very curiously I went there and I then hearing from Guru Maharaj that first time, such a like मीठा बात, इतना मधुर वाणी, इतना मधुर है। वो क्या महाराज जी क्या बता रहे उधर, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं गए मेरा उधर। Actually I went to see why they are telling science in Bhagavad Gita, you know. But after going there, so mesmerizing Guru Maharaj's words. Then that time I 10-15 small books I read. Then Guru Maharaj asked any questions. Then by writing I gave one. Guru Maharaj, who wrote this question? Then Guru Maharaj. Then I stood up. It's a very nice question. In that small books, Prabhupada was mentioning you need one spiritual master. You have to approach a spiritual master. Immediately in that moment, in my heart, I felt, yes, he is my guru. He is my spiritual master. I feel very difficult to express that moment, that joyfulness in my heart, that moment. But one more astonishing thing is that Guru Maharaj captured
me, one very old senior actor came to attend that program. Very senior. But when he was young, he was a comedian. So he could, and Guru Maharaj was calling everyone to come onto the stage, offer flowers to Prabhupada. I was wondering, generally in no public program, any public program, nobody allows everyone onto the stage. I was very new in the beginning. So I also went there, offer flowers, and Guru Maharaj, all the youth, you stay here and dance here on the stage. So I made that. After that, this old senior citizen, comedian, he could not come onto the stage, not able to walk. That time Guru Maharaj, he himself came down from the stage and he embraced him. That is very astonishing to me. She is such a spiritual personality. Because already I am reading Prabhupada books, small books. Little bit we can understand. See, he is a comedian, not even serious actor. He is joker. That see how much he loves. He has no relation with him, but because he has come, he has shown some interest to come onto the stage, but he could not come. Guru Maharaj, he himself came down to embrace him. So that scene even today is in my mind very vividly, very clearly. Then afterwards I joined in Tirupati, but I could not come to Ujjain. Then in Salem I was serving. Then Salem, Srila Bhakti Swami Maharaj. Maharaj asked, from whom do you want to take initiation? And I told like this. Then Maharaj told, very nice. Go and take immediately. Then that Gokul Chandra Prabhu, maybe Maharaj knows, Salem president, very wonderfully. So he is going to be sannyasi. He also gave a letter and he sent me 2008 March. First I came, approached Maharaj. And the Maharaj told. Then finally Guru Maharaj gave me appointment and went inside. And Guru Maharaj, if it is today, I could not go so bravely to Maharaj, Guru Maharaj. That very foolishness. Fools rush where angels think twice to enter them. So I went to Guru Maharaj and two more devotees also came with me. And Guru Maharaj, and first I offered the Balaji Chadar to Guru Maharaj. Then I gave Laddu, Prasadam. Then we three were sitting. Then Guru Maharaj asked, where are you from? We were from two different temples. And I told like this, from Srila Bhakti Swami Maharaj. Then why don't you take Diksha from him? My mind became blank now. What to speak? I was perspiring in that AC room. I don't know how the answer came. Then I told Guru Maharaj, I have heard your lecture in Hyderabad. Then Guru Maharaj, oh, okay. Till few moments gap, very difficult for me. My brain became completely blank. Maharaj is telling to take initiation from Bhakti Swami Maharaj. When I told, I heard from this in Hyderabad. Then Guru Maharaj told, okay. Then what is the point in taking Diksha without Siksha? This I consider even today personal instruction to me. Not maybe generalized, but I take personal instruction. Since that, then Guru Maharaj told, keep coming here, listen. Then now there are no initiations for 2008 Gaura Purnima. Next time I will give you initiation. Then
stayed here 2-3 days. Then now brahmachari, new brahmachari staying there now. That was Prasadam Hall in the beginning. There we were 3 sitting together in the line. Guru Maharaj coming and approaching everyone, inquiring from them whether they are well settled, means how their room are traveling, everything. Then he came to when 3 of us are sitting first, and he inquired from us also. Then that made very happy. So yeah, even today that Maharaj coming and with a smiling face approaching everyone, going to each and every devotee. So since that day, then as Maharaj told, every year I tried to attend Guru Maharaj's lectures in India, but I could not go. At least this much, because Guru's order has so much strength that I will. Every Janmashtami, you know, in Iskcon is very tiresome service. But very happily we perform. At least for me, is very happy. If Janmashtami coming means immediately Ujjain, I am going to Ujjain. Because coming to Ujjain means 2 months before we have to book ticket to train. So I remember train. I have ticket. Let me finish the Janmashtami service. Then we go to Ujjain. We attend seminar at Guru Maharaj Association. So this way, then in 2008 Janmashtami Guru Maharaj gave initiation. Then 2012 Guru Maharaj came for GBC meetings in Tirupati. There Guru Maharaj gave me opportunity to serve him personally, bringing prasadam and washing his clothes. And one service I could not do, massaging his legs, lotus feet. Guru Maharaj's secretary Anand Prabhu, he told me, Guru Maharaj is very tired now. Is there anybody to massage his feet? Then I told, massaging is a simple thing. Then I went where I first touched Guru Maharaj's lotus feet. Guru Maharaj told, you don't know massaging. Even today I think you don't know massaging. Such a useless fellow. You could not serve Guru's lotus feet. So I am praying, Guru Maharaj, I want to serve your lotus feet. Wherever you are. So then, just before Corona, Guru Maharaj came to GBC college in Tirupati. Then we went there. Guru Maharaj spoke very intimately with all the devotees who has come there. Then Guru Maharaj told about where are you preaching, how everything is going on. Then Guru Maharaj spoke, inquired something about Ahobilam. So what is the meaning of Ahobilam? Then there some devotees are telling in Telugu. Guru Maharaj is also speaking Telugu, some few words. And everyone is laughing in the room. The Guru Maharaj is trying to speak some Telugu words. And immediately Balaji Prasadam came that time. Somebody brought Guru Maharaj. Okay, you came on right time. Then he took prasadam, Balaji Laddu, very special prasadam. Balaji dosha, not dosha, vada. Is very rarely available. So he distributed to all of us. Then everyone went outside. I was still standing there. Guru Maharaj taking prasadam, Balaji Laddu, vada. It is such a love and affection. How he is holding each Mahaprasadam, each grain of Mahaprasadam, so sensitively looking at it with such a love and affection. I stayed there for a few minutes. How he is taking it. I was afraid inside. Guru Maharaj may tell me, go out. But he did not tell anything. Krishna Keshwar Prabhu was there. Such a graciously he was holding prasadam, putting in his mouth. Then he's seeing Balaji in the laddu, in that vada. So these very rare moments. Then 2012, Guru Maharaj
gave some opportunity to serve. Then finally, when he was leaving, so he told me, I went to the car and offered obeisances. Told me, become a good devotee, then he'll. So that's a blessing of Guru Maharaj. Because Guru Maharaj, 2008 Gaura Purnima, I remember, Shivaram Swami Maharaj came, His Holiness Shivaram Swami Maharaj. Both of them were singing for Gaura Purnima. That in that 1 week lectures I attended, in one lecture, Guru Maharaj told, for all of the devotees who have assembled here, I am praying to Lord Gauranga for your progress in spiritual life. So even today I feel, because Guru Maharaj prayed, I am staying in on the path. So then finally, I would like to say one thing. Since 2008, I am attending this Srila Prabhupada Memorial Festival. Before that also, I was hearing a lot of Prabhupada lectures. Then, but the moment I started to attend this Srila Prabhupada Memorial Festival, the appreciation for Srila Prabhupada increased manifold because of Guru Maharaj's this. And one more thing, whenever I see Guru Maharaj, think of him, immediately Prabhupada comes in my mind. I feel, yes, here is Prabhupada for us. I personally, here is Prabhupada for us. When I was reading Srila Prabhupada abridged version, Leelamrita, not 7 volumes, single edition, abridged version, in that first reading, I felt that the whole world is chanting Hare Krishna everywhere. Prabhupada is everywhere. But whenever I see Guru Maharaj or think of him, his activities, immediately I remember that abridged version of Prabhupada is going everywhere, is chanting, is going on everywhere, in all airports, big cities. So Guru Maharaj is going worldwide, preaching everywhere. That reminds me of that Prabhupada Leelamrita. Means this appreciation for Prabhupada, means Guru Maharaj is giving Prabhupada wherever he goes. Srila Jayaprakash Swami Maharaj told once about Guru Maharaj. It's easy to be Krishna conscious, but very difficult to be Prabhupada conscious. That Srila Bhakti Charu Maharaj is doing very nicely. So this Prabhupada Memorial Festival is giving so much strength to me. Now that's, I feel Guru Maharaj, that's why Guru Maharaj told, come here and hear from the devotees here. And just like in the Hindi Bhagavad Gita or Hindi books, we see Krishna Kripa Murti is given in front of Prabhupada's name. Krishna Kripa Murti. In English, it is divine grace. So I feel regarding Guru Maharaj, if you give any form to Srila Prabhupada's mercy, so Srila Guru Maharaj is the personification of Srila Prabhupada's mercy, or in other words, we can say, Srila Prabhupada loves so much Iskcon. If you give some form to the Srila Prabhupada's love for Iskcon, that is Srila Guru Maharaj. So that means Iskcon, he loves everyone, whether he is initiated from Guru Maharaj or irrespective of initiated or non-initiated. So Srila Bhakti Rasamrita Maharaj told once, speaking about Srila Guru Maharaj, he told, Srila Bhakti Charu Swami Maharaj gives more time to the disciples of other gurus than to his own disciples. Because he is so much concerned with the unity of the Iskcon, not only his disciples, initiated disciples. So all the devotees of Iskcon, they feel very privileged in the presence of Guru Maharaj. So this year, after Corona, I was thinking now Guru Maharaj means
And then neophyte thinking, Guru Maharaj is not here now, whether it may not be possible to go to Ujjain. So let us celebrate festival here in our temple. So 2020 we did, 21 also we did, and 22 Tirobhavati Mahotsav we went there. Till then also I was thinking we will celebrate in our temple, in a small temple. Then there was Arunaksha Prabhu, Maharaj was sitting there in front of Guru Maharaj Samadhi Mandir, and Arunaksha Prabhu caught me there, and he told Maharaj, he is not coming to Ujjain. Then in front of Maharaj, then since how many years you are not coming? Then I told to Arunaksha Prabhu, just 2 years. Why did not come there? Because Corona was. Then Prabhu said, now is also Corona? Then there is no Corona now. Then you have to come now. In front of Maharaj. Then I said, okay, yes, we will come. So now, today I met Arunaksha Prabhu. I express my heartfelt thanks to him. Because so many Mahavaishnavas, great Vaishnavas came here. And hearing from them and in their presence, just like morning Udayananda Prabhu is telling us. Chaitanya Mahaprabhu is looking for Krishna, this corner, that corner, this corner. Prabhu Goswami looking for a Radha Vraja Devi case. Where are you? Where are you? So Udayananda Prabhu told us, yes, Guru Maharaj is here, in that corner, this corner, that, but you have to see him. So this Udayananda Prabhu expressed his heartfelt things, what is in his heart. Yes, I am also feeling the same after hearing from Udayananda Prabhu. Yes, Guru Maharaj is here everywhere, but I don't have eyes to see him. But like devotees from Ujjain, like Maharaj is here, and great devotees are here. So in their presence, I am feeling Maharaj is here. So I have to come every year again, take mercy from the Ujjain, devotees from the Hare Krishna. Srila Bhakti Charu Swami Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच प्रभु. तो प्रभु जी ने गुरु महाराज का ने बहुत कुछ बताया. इससे हमें समझ में आता है गुरु महाराज की महिमा का कोई अंत नहीं है. हम जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे बीच समय को देखते हुए आखिरी 3 ऑफरिंग हैं. हिज ग्रेस ब्रज किशोर प्रभु, हिज ग्रेस कृष्ण कीर्तन प्रभु, उसके बाद हिज ग्रेस ब्रज किशोर प्रभु, हिज ग्रेस कृष्ण कीर्तन प्रभु हमारे ग्रस्त भक्त समुदाय के शुरू से ही गुरु महाराज विशेष कृपा प्राप्त भक्त हैं. गुरु और हर ग्रेस अंगिन राधा माता जी हिज ग्रेस श्रीनाथ कृष्ण प्रभु के सुपुत्र के रूप में पूरी तरह से विशेष रूप से मृदंग जिसका नाम गुरु महाराज ने दिया है कृष्ण कीर्तन में संलग्न हैं. तो आइए. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी निति नामिने स्निग्ध चेता सुप्रणेता वाग्मेनम सरसाप्लुतम प्रभुपाद गत प्राण नौमि भक्ति चारु पदम. Dearest Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances at the dust of your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your divine lotus feet. In Srimad Bhagavatam, it's mentioned that Mrideham Madhyam Sulabham Sudarlabham Plavam Sukalpam Guru Karna Dharam. That means this human body can be compared to a perfectly constructed boat, having the spiritual master as the captain of this boat. Guru Maharaj, your presence in my spiritual life had kept me spiritually alive. With the passing of time, the void vacancies felt more and more. Time and time, your memories, pastimes, kirtans gets coming up, and it's a mixed emotion to reminisce all those things, as at a point I feel so fortunate to relish all those moments, and at the same point it's very sad and aching to realize that I won't be able to get it again. During my childhood days, when some of my mischievous activities were reported to you,
You used to gracefully smile and look into my eyes and say, "So Krishnadas, Krishna Bhakta Nishkam Ataiv Shant. So no more mischievous activities, okay?" However, I wasn't mature enough at that time to understand your fatherly loving and caring affection. But now, with the sweep of time, I can get deep down into the realization how personal you were. I have personally seen so many devotees hanker for your glimpse, smile, and personal association. But then my curtailed list of getting your causeless mercy drops in, and I just can't get over the fact that what made me eligible to serve your divine lotus feet. Guru Maharaj, because of my studies, I had to move to Pune and live there in voice, and the spiritual culture is amazing there. But still, the mood of Ujjain and the vivid aura is missed a lot. It's very sad to practically realize the fact that we value a person more and more when he leaves us far behind. Now it's all about memories, recollection of pastimes, listening back to kirtans and music. Apart from all these seasonal realizations, I'm still very insincere in my practice of devotional life. As you once said that, if you are sincere about your spiritual life and spiritual master, just try to find him where he is. And that search will end up and take us up in spiritual world. From the deepest core of my heart, I really want to find and serve you back. But it's very difficult to navigate on the path, especially when the father leaves the hands of his child just to check his sincerity to find him and return back to him. Please guide me so that I can keep this as my goal of my life and keep serving lordships, Guru and Vaishnavas. I have been committing various offenses, doing numerous mistakes, and getting lost from my spiritual track. Please forgive me for all these offenses and kindly bless me so that I can progress in my spiritual life. Wishing to serve you soon, your servant of your servant, Krishna Kirtan Das. थैंक यू कृष्ण कीर्तन प्रभु। ये इसके बाद हिज ग्रेस ब्रज किशोर प्रभु, ये हिज ग्रेस बासुघोष प्रभु के सुपुत्र हैं और अभी बड़ोदरा में ही रह रहे हैं प्रभु जी। और हाल ही में चर्चा के दौरान प्रभु जी ने बताया कि 5 तारीख को न्यू तालवन अमेरिका में मिसिसिपी में एक मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं प्रचार कार्य के लिए और पुजारी सेवा करने के लिए। तो जिस तरह बासुघोष प्रभु से गुरु महाराज का बहुत प्रेम है, तो वही प्रेम गुरु महाराज का प्रभु जी को प्राप्त हुआ है, तो वो ऑफरिंग अपनी देना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट ऑफरिंग विभोर प्रभु। जस्ट वन अनाउंसमेंट, ये यहाँ पे किसी का खो गया है नेक बैंड, तो यदि किसी भक्त का हो तो नमः विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्मीनां च रसाप्लुतं प्रभुपादगत प्राण नौमि भक्ति चारु पदम। Dear Srila Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada and your holiness. Glories to your holiness are unlimited, but I am so insignificant and unqualified to even glorify you. I don't even have enough words to glorify your holiness. Your holiness are an ocean of mercy. You have so mercifully accepted me as your disciple and servant, even though I am the most unworthy and unqualified. I can't even thank you enough for everything. Your holiness are an ocean of knowledge, mercy, and compassion. You have instructed us to be very sincere in our spiritual life. I am trying to follow your instructions and become more sincere and serious about my spiritual life. I am improving my sadhana at a very slow pace and still need to work very hard and strive for perfection for the pleasure of your holiness. Although I am very insignificant and the most unworthy and unqualified, I still seek your causeless compassion, mercy, and blessings so that I may follow and execute your instructions to the best of my best, so as to please you, holiness, and Srila Prabhupada. Your glories are spread all over the world. Your lotus feet are the only shelter and hope for an unworthy and unqualified person like myself. I take shelter of your divine lotus feet, your most unworthy, unqualified, and most fallen servant, Braj Kishore Das. Hare Krishna.
थैंक यू ब्रज किशोर प्रभु। इसके बाद विभोर प्रभु से हम निवेदन करेंगे वो अपने जो श्रद्धांजलि है गुरु महाराज को अर्पित करें। विभोर प्रभु हमारे ग्रस्त भक्त समुदाय में अर्ग्रेश ज्योति प्रिया माता जी के सुपुत्र और पूरा परिवार भगवान की सेवा में संलग्न हैं और एक तरह से शुरू से ही ये सभी जुड़े हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह माधवाज एक बैंड है तो ये भी एक बैंड बना सकते हैं अवंतीस के नाम से, तो बहुत अच्छा रहेगा। विभोर। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी इति नामिने स्निग्ध चेत सुप्रणेता वाग्मिनम च रसाप्लुतम प्रभुपाद गत प्राण भक्ति चारु स्वामी पदम। I wrote a poetry. Dear Guru Maharaj, my savior. Dear Gurudev, at times we come to you, our faith is not as strong, but in your loving arms we fall. You show us that we belong. You carry us when we think we can't go any longer. The love you can give only grow stronger and stronger. With you living in our daily lives, you are the living Guru we praise. Thank you for the goodness and for showing us along the way. At times we want to lay it all down to you, and at your feet we fall. You show us that there is a way and help us to give it our all. You give us the faith to be stronger, even though we may not know. The things that are not of you, you help us to let go. You are my strength, my savior, the rock that makes me unbroken. You lead me to the righteous, with things I feel are all unspoken. We pray for understanding, but sometimes we make stumble. We look up to you for answers so that our world may never crumble. We know at that times you will be there to carry us through it all. You are there to pick us up even as we may fall. Dear Gurudev, we ask you for your pardon. For one day we will be with you, living with you in Krishna's garden. Until then, thank you for all many memories filled days. Keep us so loved and blessed. Thank you, dear Gurudev. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू विभोर प्रभु। तो हम सभी भक्तों के बहुत बहुत आभारी हैं। श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल और श्रील गुरु महाराज श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज 77वें व्यास पूजा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। ये जो व्यास पूजा ऑफरिंग बुक है ये हमारे भक्त हार्दिक प्रभु और अन्य कई भक्तों ने सहयोग किया है। साथ ही जो ये उत्सव सफलतापूर्वक मनाया गया है इसमें बहुत सारे भक्तों ने सजेशन करना हो या ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं हों तो और भी बहुत सारी जो सेवाएं हैं जिनके बिना ये उत्सव सफलतापूर्वक मनाना संभव नहीं था। तो बहुत सारे भक्त इस उत्सव से बहुत ही प्रसन्न हैं। अभी हिज ग्रेस शुद्ध कीर्ति प्रभु ने भी एक मैसेज किया कि हम दोनों को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, वो और उनकी पत्नी, और वो बोले कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे पास वृंदावन के अलावा एक और घर है जहाँ हम जा सकते हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि वैष्णव प्रसन्न हैं। तो हम सभी भक्तों का जिन्होंने सेवाएं की हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के इसका समापन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज लग रहा है दिन 24 घंटा 25 घंटा क्यों नहीं आते थे, सुनते रहो। तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम को इस्कॉन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कृष्ण किशोर प्रभु को कोऑर्डिनेटर बनाया था। तो ये सारे जो दिक निर्देशना है कृष्ण किशोर प्रभु का तत्वावधान में हुआ है। हम उनका आभार प्रदर्शन करते हैं क्योंकि देखना छोटा बच्चा है लेकिन बुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो में इतना सुंदर में प्रोग्राम हुआ है, अभी तक तो कोई कंप्लेन आया नहीं। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल की गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you very much. Sorry, I forgot to mention his name. All team is led by him. बहुत ही अच्छे भक्त हैं प्रभु कृष्ण किशोर. बहुत अच्छे से संभाली पूरे उत्सव की बागडोर. तो हम उनका बहुत धन्यवाद की. श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल की, श्री गुरु महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे. श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की.